Hi guys, welcome back to my channel S.Majumder Illustrations. So today in this video we will learn how to draw the fashion hand illustrations. I will show you the three types of fashion hand illustrations. So let's begin. So let's get started. So पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मल हैंड बनाएंगे. आप बोल सकते हो स्केलेटन वाला, ताकि मेरा जो हैंड हो वो कैसा शेप होगा. सो जो भी आप रेफरेंस पिक्चर्स ले रहे हो उसका एक स्केलेटन्स बना लेना, ताकि आपको आइडिया मिल जाए जो मेरा हैंड कैसा होगा. ठीक है. नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे इसी स्केलेटन का एक आउटर लाइन ड्रॉ करेंगे. मतलब स्केलेटन के ऊपर अगर हम आउटर लाइन ड्रॉ करें तो कैसा आएगा हम लोग का हैंड. Follow the skeleton figure so that you can get that how my outline will go through the skeleton. हड़बड़ी मत करिएगा, ध्यान से, एकदम स्लोली. अब देख सकते हो ये जो मेरा हैंड है वो मेरा एक रेफरेंस पिक्चर से ही मैंने ड्रॉ किया है. नाउ द फाइनल हैंड, क्योंकि आपको अब आइडिया मिल गया जो मेरा कैसा हैंड होने वाला है, तो आप इजीली ड्रॉ कर पाओगे. तो इसीलिए मैंने पहला वाला 2 स्टेप्स दिखाया है. जो बिगिनर्स हैं उन लोग को भी आइडिया हो जाएगा जो विद इन अ सेकेंड कैसे आप एक हैंड ड्रॉ कर पाओगे. नाउ दिस इज़ द फाइनल वन. और ये हैंड तभी होता है जब एक मॉडल स्ट्रेट वॉक करता है या फिर उसका जो फिगर व फ्रंट पार्ट ज़्यादा रहता है. तो एक हैंड या फिर द राइट हैंड जैसे अगर फ्रंट पार्ट में होगा तो तभी इसका हैंड ऐसा आएगा. ठीक है. आप अगर कोई भी मैगज़ीन देखोगे तो देखना जो राइट हैंड जब मॉडल एकदम स्ट्रेट वॉक कर रहा है तो उसका राइट हैंड फ्रंट पार्ट की तरह ऐसा ही आता है. ठीक है. मैंने इस वीडियो में बस तीनों ही 3 टाइप्स का हैंड दिखाया है. नेक्स्ट वीडियो में हम उससे भी ज़्यादा और 2-3 टाइप्स का हैंड दिखा देंगे आप लोग के लिए, ताकि आपको पता चलेगा जो कैसे हैंड ड्रॉ करें. तरीका, आइडिया जो भी है, टेक्निक जो भी है, लगभग एक ही है. पहला आप स्केलेटन, उसके बाद द आउटलाइन एंड द फाइनल वन इज द एडवांस वन. ओके. ये मैंने बेसिक स्केचिंग किया है ताकि शैडोज के लिए. और पेंसिल मैंने यूज़ किया है माइक्रोटिप पेंसिल दैट इज़ इजीली अवेलेबल इन Amazon. यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर और इवन इन फ्रॉम द स्टोर्स. So this is the first type of hand.
Now I will move on to the second type of the hand. ये होगा तभी अगर ये भी फ्रंट का ही है, जब मॉडल एकदम स्ट्रेट वॉक कर रहा है और उसका जब लेफ्ट हैंड थोड़ा सा बैकवर्ड की तरह पीछे से जस्ट लिटिल बिट ऑफ हैंड शो कर रहा है, उस टाइप का हैंड है ये। सो आप देख सकते हो पहले मैंने उसका एक रोबोटिक बनाया है। पहला वाला में हमने स्केलेटन बनाया है। नेक्स्ट वाला में हम पहले से ही थोड़ा सा रोबोटिक बना दी ताकि थोड़ा सा फास्ट रहे। सेकंड में the same thing, I will draw the outline. So after the robotic, now the outline. The process is just the same, just like the previous one. Have patience, go slow, nothing to be hurried, because those who are beginners, they always have in a rush. Never do so. Have some time, have some patience. The last one is the final one. Now I will not never draw the robotic or the outline. I will here draw the exact figure or the exact hand directly without skeleton or the robotic. पहला वाला जो है वो प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर वक्त आप स्केलेटन या रोबोटिक से स्टार्ट करो, क्योंकि मैं हर बिगिनर्स को ये बोलते रहती है आप बिगिनर्स स्पेशलिस्ट फॉर द बिगिनर्स आप स्केलेटन और रोबोटिक से स्टार्ट करो, क्योंकि जब आप फाइनली एडवांस लेवल पे पहुंच जाओगे तो आप डायरेक्टली ड्रॉ कर पाओगे एंड इट विल जस्ट ट्रिक्स ऑफ सम सेकेंड्स. So this is almost done. This is the basic shading to have the perspective view or have the view of the darkest part of the hand. Nothing like that. Just simple basic shading.
my second hand is done. Now the last and the final one. ये है एक्चुअली बेसिकली जब आप वेस्ट पे हाथ रखते हो तो कैसे ड्रॉ करना है. सेम कोई मॉडल स्टैंडिंग पोजीशन पे है, लेफ्ट और राइट हैंड अगर वेस्ट पे हो तो कैसे आप ड्रॉ करोगे. सिंपली मैं फर्स्ट इधर रोबोटिक से स्टार्ट किया है. These lines are for the finger point. जहाँ पे हम लोग का नकल्स होता है वो पॉइंट के लिए मैंने ये दोनों लाइंस ड्रॉ किया है. As usual, now moving part to the outline of the robotic one. इस साइड में हम थोड़ा सा फिंगर का भी लाइंस ड्रॉ कर लेंगे. This is the thumb part. Now the final outline. Here I will draw directly. No more robotic, no more outline. Just I will draw directly. That's why I always say practice with the robotic and the skeleton one so that you can draw any figure directly by just seeing the pictures or the reference one. Okay? आप लोग देख सकते हो मैं कितना धीरे से स्मूथली, कोई हड़बड़ी नहीं ड्रॉ कर रहे. Have patience while drawing anything.
So this part, the last part of my hand is almost done. So अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे या फिर मेरा वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको लगे मेरा वीडियो से आप कुछ सीख पा रहे हो, ज़रूर आप सीखोगे तभी मेरा चैनल को सब्सक्राइब करोगे. So if you think that my channel is knowledgeable, if you think that my channel will help you to upgrade your own illustrations, so please subscribe to my channel so that even I can also grow, and also I can bring some latest more video regarding the illustrations for the students, for the beginners who really want to learn some things new. So till then, take care. Bye bye.